Hi friends, welcome to the AC Wale Garam Charche, which is presented by RATA Mumbai Gen Next. We are in the third episode where you will get insights into the industry. You would know the industry stalwarts here and also the future developments which are there in this third episode. So our guest today is Mr. Sandeep Shenoy. He is a production engineer and a master's in marketing communication. He is also heading the Anukool HVAC, which is a contracting firm, which is into contracting and MEP services. Recently launched is Anukool Ka Gurukul, which is a skill-based training for young budding engineers where they train and with a DIY, which is do-it-yourself approach. He's a very curious mind who loves to thrive on challenges. During his free time, he goes on treks and he likes to read the history of geographies and geographies of history. Let's get directly into the crux of the matter. So welcome, Mr. Sandeep. Thank you, Dhrumil, and thank you, RATA, for calling me here. How are you doing today? All well, all good. It's always pleasure to be a part of RATA journey. Yes. And it's really exciting to be here with you That's today. so good to know. So Sandeep ji, getting into the matter now, आप ये जो अपनी HVAC industry है, you have been part of this since a very long time. But now अभी लोगों को आपकी जर्नी जाननी है. How did you get into this industry and what this industry has given you back? So अगर आप उस पे if you could throw some light, that would be great. Sure. मेरी जर्नी वैसे चालू होके अभी करीबन 30 साल हो गए. As a young engineer, I joined a company called Carrier Air Conditioning System way back in 94. Okay. 94 से 97 तक मैंने नौकरी की कैरियर में. Okay. उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ मुंबई में, वहाँ MMS मार्केटिंग किया और 99 में बिजनेस चालू किया. So as an industry professional, I'm here since last 30 years. As a businessman, I'm here since last 25 years. Okay. Yeah. So that has been the short timeline of my journey. Okay. और पिछले 25 साल में when I started off, तो मैं छोटे विंडो AC, स्प्लिट AC इंस्टॉलेशन, उसका सर्विसिंग बिजनेस मेरा वैसे चालू हुआ करीबन 2004. मतलब पहले 5 साल का जर्नी तो मेरा स्प्लिट और विंडो AC बेच के ही था. बाद में ऐसे लगा कि एक लेवल ऊपर जाना चाहिए, थोड़े चिलर के जॉब करनी चाहिए, थोड़े बड़े साइज के जॉब करनी चाहिए, बेसिकली प्रोजेक्ट करनी चाहिए. स्केलिंग का कंसेप्ट. यस, यू आर राइट. स्केलिंग का कंसेप्ट आ गया मन में. तो और तब तक कस्टमर का बेस भी थोड़ा बन चुका था, कस्टमर ग्रो हो रहे थे, तो उनके साथ ग्रो कर करके आज हम लोग 25 साल की जर्नी पूरी हुई हमारी. और या वी आर हैप्पी. वी हैव अट्रैक्टेड क्वाइट अ फ्यू क्लाइंट्स. अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं अभी हमारी कंपनी. फार्मास्यूटिकल, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रियल. जर्नी हैज़ बीन गुड एंड एक्साइटिंग. सो एक गरम चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर. जैसे आपने कहा कि यू हैड वर्कड आउटसाइड ऑल्सो और आपका अभी खुद का बिजनेस है, तो आपको बेसिक डिफरेंस एज इन वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट एंड व्हेन यू आर द सोल प्रोप्राइटर ओनर ऑफ द फर्म, आपको क्या डिफरेंस लगता है और वो मेन टॉप 3 पॉइंट्स विच यू थिंक आर प्रीटी डिफरेंट उसमें से? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड हैप्पी दैट यू आस्क्ड दैट. सी, जब आप मल्टीनेशनल के लिए काम करते हो तो आप सिस्टम्स और प्रोसेसेस सीखते हो. भले आपको पूरा फ्रीडम नहीं होता वहाँ डिसीजन लेने का, बिकॉज एक दायरे में काम करते हो. बट मल्टीनेशनल कंपनियाँ या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनियाँ आपको क्या सिखाती है कि एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है, काम करने का तरीका कैसे होता है, लीडरशिप को ऑब्जर्व करने का आपको मौका मिलता है. और यही चीज़ें आपको सीखनी होती है. सी, टेक्निकल चीज़ें या फंक्शनल स्किल्स देखिए आप काम करते करते या जॉब करते करते भी सीख जाते हो. बट ये सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, लीडरशिप, उनका सोचने का तरीका, विजन ड्रॉ करके लोगों को इंस्पायर करके आपको ज्वाइन करने का तरीका, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये आपको बढ़िया कंपनियां सिखा सकती है. और मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बोलो या आप पॉजिटिव बोलो कि वो मेरे 3 साल जो मैंने बिताए कंपनी में, उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ. तो मतलब मोर देन टेक्निकल जो स्किल्स यू गैदर फ्रॉम कॉर्पोरेट, अपना ज़्यादा आप कह रहे हो सॉफ्ट स्किल्स सीखना बिल्कुल ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिशियल था कॉर्पोरेट में. यू हैड इट राइट. सॉफ्ट स्किल्स सीखना जरूरी है और मैंने सीख लिया काफ़ी हद तक, मैं बोलूँगा. और मैं आज भी इम्प्लीमेंट करता हूँ. और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं किस्सा बोलना चाहूँगा. अभी मेरे जो तभी इमीडिएट बॉस थे, आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के MD है. अच्छा, ओके. एंड मेरे और उनमें ही वाज अबाउट 6 years 8 years सीनियर.
we present to you our wide range of chilled water systems where traditional technology meets modern innovation. Chilled water systems have been a cornerstone of HVAC systems for decades, but our products are designed to meet the demands of today's world. To me, हाँ और मैं जब भी उनके केबिन में जाता था हाँ तो उनके चेयर के ऊपर 2 छोटे से मैसेज लिखे रहते थे. मतलब इट वाज अ प्रिंटेड बोर्ड एंड इट वाज राइट अबव हिज हेड. एंड जब भी मैं उनके केबिन में जाता था तो वो 2 चीज़ें पढ़ता था. और इस बात को आज 30 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है. ओके उसमें से पहली चीज़ लिखी थी कि इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मेनी मिस्टेक्स, मे बी यू आर नॉट टेकिंग इनफ रिस्क. करेक्ट वेरी That was number 1. हाँ. And second was move your mind before your limbs. अभी देखिए, मैं ये चीज़ें 30 साल पहले पढ़ा था, अभी भी याद बट मुझे अभी भी याद है. और सबसे बड़ी बात, ये मैं अभी भी मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ. सो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या फ़र्क है, तो मैंने बताया कि ये अच्छी बात है कि आप सिस्टम्स, प्रोसीजर, लीडरशिप की बातें सीखते हो, समझते हो, और जो सीखा है वो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और आपका जो विजन है या एक पर्टिकुलर सोच विचार है बिजनेस को बढ़ाने का, बिजनेस को अलग तरह से करने का, वो आपके बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बिजनेस में फ्रीडम है. हाँ. तो फ्रीडम बहुत रिलेटिव कंसेप्ट है. और मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा. हाँ. बट जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड, एंड आई लव बीइंग ऑन अ रोलर कोस्टर ऑल द टाइम. सर बट वर्क लाइफ बैलेंस तो आई थिंक बिजनेस में यू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी नो व्हेन वी कंपेयर. See, a work-life balance, sometimes I feel it is, kind of overdone thing sometimes. For a businessman who is out to build a business, one thing, at least to my mind, is the work and life is completely integrated. If I'm doing a business, that is out of the love for my business, with a passion, with a purpose, with a pride to build that business. Correct. So that necessarily means that you are loving that business. A part of that business आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, या शायद आपको लीगलिटी ऑफ द बिजनेस अच्छी नहीं लगेगी, या कुछ वो नेक्स्ट फेज ऑफ पॉडकास्ट में अपन बात करेंगे जो पार्ट. यस, तो आपको शायद नहीं, बट जो कोर एरिया है बिजनेस का, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आपको संडे मंडे आफ्टर ऑफिस आवर्स मायने नहीं रखता है. Correct. So for a businessman, as a business owner, it's a seamless, well integrated thing, and I think we should be able to enjoy with the sheer joy and confidence of being able to build a formidable business. Correct. So now you have been part of RATA since long, and there is a vision among RATA that कि जैसे main purpose ये है कि अब जैसे अपन HVAC contractors है, SSDs है, traders है, manufacturers, we come together and whenever there is a thing to represent in front of the government, we are a one strong voice. So united we stand, divided we fall. वो simple concept से है. So now what do you think 5 to 10 years down the line, how important will be RATA as a body for us as a HVAC contractors going hand in hand with RATA? Yeah, it's good that you asked this question again. I would say, see, RATA apparently is there for last 75 years. I didn't know about it till few years back. Okay. And good that people like Parasji, then Ajit, then Mihir, and they have really done a fabulously great job to really revive it, if I have to really use the word revive it. Correct. And brought it to a level where we are doing a podcast today. Yeah. On the forum of RATA. So really kudos to them. It takes a lot of courage, conviction to really pick something up which is dormant and then make it really run the way it is running right now. So in episode 1, which we had shot with Mihir sir, in that he talked a lot about so many initiatives by RATA. I'm sure you would have also come across all those initiatives and all of that. So as you said, they have revived it, and it's a very true story. Yeah. So coming back to your question of what is the vision? See, the people who have revived it, yes, I took all those names who have really sweated and worked really hard to bring it to a level where now you have thousands and members, and more are joining. 2,000 plus members. Yeah. So their vision, whenever I have had a chance to interact with these guys, their vision and my vision is no difference. It is a clear platform, a strong voice where a strong voice can be heard, and for host of issues. It could be
the SSD and contractors challenges regarding skilled manpower, maybe the pricing parity, maybe the safe practices, the GST matters. See, this industry, after all, is a massive industry. There are refrigeration is a part of this, air conditioning contracting is a part of it, traders community is a part of it, OEMs are a part of it. Yeah. I really don't see many industries having such huge ecosystem. Even so many Stakeholders. And it's really important. It was really important that time, and it is important even now, to have a platform like this where we can support our fraternity members irrespective of their core businesses for various issues. I mean, issues which can be fought collectively rather than individually. Right? So it's a great platform, and my vision is same as the people who have revived it. It's to really make this platform more stronger, more members, more stronger. And more accessible, and make it more, really take it to the tier 2, tier 3 cities and really make it grow and create a value for all those people who are associated with it. That's very true. No, that's a very good thought. And so again, coming back to the challenges which you have had, so since this is a podcast, if कोई story होगी ना ऐसी कोई कि अपने trade में तो जैसे customer के साथ we have a day-to-day troubleshooting और ये issue रहते, there is some story from which our listeners, viewers, they can take some learning how there was a very difficult challenge coming to HVAC contracting. Of course, एक peculiar challenge थी, आपने वो solve कर दिया, and the customer delight was also there in the end. So that kind of a story, agar if you could share that. So this would have happened about maybe 17-18 years back, but it's as fresh as it happened yesterday in my mind. One of our corporate client had a office inauguration on a Monday morning. Okay. And it is quite a substantially large office, I would say. And we had done almost everything except for the conference room, and the MD's cabin was not done because they kept on making changes as they do. Okay. And we were stuck on the last day, and it was not a very, it was an independent split what we had to install. Okay. So the client called me and said, this has to be done. Monday is the inauguration. Today we are already, it's a Saturday night call. So I don't know what happened. On that particular Sunday morning, I reached site. Okay. Normally on a Sunday morning you don't do, but that morning I reached the site, and when I had a call with my subcontractor who was to really do the piping and the cabling, I called him. Okay. And he kept on saying, sir, piping हो गया है, cabling हो गया है, अभी आधे घंटे में ठंडा हवा चालू हो जाएगा. He kept on saying, while I'm looking and trying to locate where the piping and where the cabling is. Okay. And to my utter surprise, in both the places, there was no piping, there was no cabling, no trace of any work. And then obviously I realized that he's lying. Then I called my own team members, got hold of few other guys who could support me. Okay. And in one, there's next 12 hours, we finished the piping, cabling. Good, there's a normal DX split AC, so it was not much of a hassle. Yeah. And piping length was not much. So in one, those 8, 10, 12 hours, we finished the piping, machine was available, and we could manage to, close that particular challenge. In just 12 hours? In 12 hours. I mean, it was split AC, so it's not a very big deal. The point was, it had to be done. Because the next day there was the inauguration. So if you really see this story, this happens every day in every SSD's life, right? Correct. We get to hear a different version from the site, our site teams or contractor engineers. But what happens on site is quite different. That is not the reality. So what I learned from this is not to always depend on your own team members. Once in a while, whether you are a MD of a 200 crore company or a SSG of a 1 crore company, once in a while you have to go show your face to the client and understand the reality first up. That is very important. You need to be there when you have to be there. That is very important. It really makes you remain in close touch with the client and avoid such mishaps, if I have to call it so. Correct. And after that incident, I don't get to go to all the sites, but after that incident, I pick and choose, and more often than not, I go unannounced. Okay. So that people are on the toes, they know that I will drop in at any time. Correct. So at least, not that we can control everything, but to a large extent, these kind of shocks are kind of taken care.
So the next time you go, so that आपको अब तो दिखता ही होगा पाइपिंग, ऐसा नहीं होगा कि अब पाइपिंग ही नहीं दिख रहा है. Yeah. Correct. So no, this is very interesting. So people learn from stories, right? So that is what we believe. तो इससे भी सीखने मिलेगा कि आप साइट पे जाओ और देखो सुपर, irrespective of your position in your organization. That's a business, right? The value is being built on the site. It doesn't get built in the office. You can look how many drawings you make, how many discussions you do in the closed meeting rooms, but the value is getting built at the site level. So that you cannot lose sight of. Right. So this is, as you talked about the current DX system, the split system which were there. अभी आगे फ्यूचर में, सो एज अ सेकेंड जनरेशन इन बिजनेस, और वी कीप हियरिंग टर्म्स लाइक IoT, AI आएगा, आपको अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं किया तो आप ऑब्सोलीट हो जाओगे. बट अपने इंडस्ट्री के साथ, HVAC इंडस्ट्री के साथ, इज इट रियली रिक्वायर्ड? जैसे चलो IT इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्री है, उसमें IoT एंड आर बज, इज इट स्टिल अ बज़वर्ड और इट इज़ द रियलिटी ऑफ द डे एंड नेक्स्ट 5 years में यू हैव टू अडेप्ट टू IoT एंड AI एंड ऑल ऑफ दैट फॉर आवर इंडस्ट्री? सो मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा इसके बारे में, और ये बहुत रिलेवेंट सवाल है. करंट कॉन्टेक्स्ट में तो काफ़ी रिलेवेंट है, बिकॉज ये इतना चेंजेस हो रहा है, इतने उथल पुथल हो रही है, एंड एवरी बिजनेस इज गोइंग थ्रू दिस चैलेंजेस. इट इज जस्ट नॉट HVAC, राइट? ऑटोमोबाइल इज गोइंग थ्रू दिस चैलेंजेस. द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स बिकॉज ऑफ दिस AI, ML एंड दिस न्यू टेक्नोलॉजीज बेसिकली. सो मेरा उसमें 2 ही पॉइंट है हमारे, और ये चीज़ ऐसी है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में ओवर एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में अंडर एस्टिमेट करते हैं. जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी वो आने वाला है, राइट? आप उसको रोक नहीं सकते. सो व्हाट इज इनकंसीवेबल राइट नाउ टू सम पीपल विल बिकम इनएविटेबल इन अनदर 3 years टाइम. यू हैव टू गेट दिस वेरी लाउड एंड क्लियर. करेक्ट. आपको वो आने वाला ही है, आज आने वाला है या कल आने वाला है, ओनली टाइम बता सकता है, हम लोग नहीं बता सकते. बट एज ए SSD, एज ए बिजनेस ओनर, आप क्या कर सकते हैं? उस चेंज के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं. करेक्ट. उस चेंज आने वाला है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं. जैसे आप प्री मानसून के लिए तैयारी करते हैं, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी यू आर प्रिपेयर्ड, राइट? और तैयारी क्या है? वो तालपत्री डाल ही देते हैं, बारिश आए ना आए. बिल्कुल, दैट्स अ गुड एग्जांपल, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट? सो आपको चेंज के लिए तैयार होना है, और वो किस तरह से तैयार होना है? करेक्ट. राइट? कि पहली बात तो आपको ये समझना है कि चेंज कोई बुरी चीज नहीं है. ये जो पर्टिकुलर चेंज आने वाला है, ये बाकी लोगों के लिए क्या है पता नहीं, बट अपनी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है. और मैं आपको बताऊंगा, कुछ ही शब्दों में आपको बता सकता हूँ कि ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि जो HVAC वाले की, HVAC SSD डीलर की अब तक की जो पहचान थी ना, ये पतरा वाला और पाइप वाला करके ही उनको बुलाते हैं. यही अपनी पहचान है. ये पहली बार अपनी हिस्ट्री में ऐसा मौका आने वाला है कि जहाँ अपना जो स्टेचर है बिजनेस का, वो 2 लेवल ऊपर जा सकता है. और आप पूछिए कैसे? हाँ, मैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऐसे कैसे मैसिव चेंज इन परसेप्शन हो सकता है. देखिए, अभी ये जो आपने सुना रहेगा, एक लिटिल टेंजेंशियल बट रिलेवेंट डाइग्रेशन आउट से, कि अब तक हमको कोई पूछता नहीं था, बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या स्पेस इंडस्ट्री, ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी जो फॉसिल फ्यूल बर्न करके अपना बिजनेस चला रही थी, राइट? अपना जो कंट्रीब्यूशन था फॉसिल फ्यूल बर्निंग, मतलब एनर्जी कंजम्पशन में, बहुत कम था. अभी पिछले 5 साल में क्या हुआ कि कार्स इलेक्ट्रिक हो गई तो उनका कंजम्पशन कम हो गया. इलेक्ट्रिसिटी LED हो गई, उनका कंजम्पशन कम हो गया. तो सडनली जो हम लोग 5, 10, 15% पे बैठे थे, वो सडनली 35% पे आके खड़े हुए, वो दिखने लगा. सो वी बिकम एलिफेंट इन द रूम. ये फर्स्ट चेंज. सो नाउ एवरीवन इज लुकिंग एट द SSDs कि अरे मेरी बिजली बचाओ. सो ये जैसे चैलेंज है वैसे एक अपॉर्चुनिटी है. नंबर 1. नंबर 2 ये हो गया कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो रही है. इसका मतलब क्या है कि सब लोगों को एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी. जैसे IoT, AI, ML, ये जो बज़वर्ड्स है ना, दोज बज़वर्ड्स विल बिकम वेरी नॉर्मल. पीपल विल रियली स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट रियली नोइंग इट दैट इट इज अ IoT. व्हाट इज मोबाइल फोन but an IoT? It's a communicable device. That is explained very well. Right? It is nothing but an IoT, right? And your watch is a IoT. Because it is talking to other devices. As long as it is communicable,
राइट. सो लोगों को समझना चाहिए कि बड़े शब्दों से आप डरिए मत. हाँ. ये अपने मित्र हैं और अपनी इंडस्ट्री को एक अलग दर्जा देने के लिए सबसे बहुत बढ़िया जरिया है ये. तो इनको पकड़ के रखिए, उनको सीखिए, लेवरेज कर सकते हैं. और जैसे अगर आपको उस बिजनेस को बढ़ाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो एक तो आप बिजनेस बढ़ा सकते हो, उसी कस्टमर को आप अलग अलग चीज़ें भेज सकते हो. जैसे मेरे पहले जो आए थे गेस्ट आपके पॉडकास्ट पे, उन्होंने बताया कि आपको वैल्यू क्रिएट करना है तो आपको बिजनेस एनहांस करना है, तो आपको उसी कस्टमर को सॉल्यूशंस देना है. उन्होंने सॉल्यूशंस की बात की थी, मेरे ख्याल से आकाश जी ने. सॉल्यूशंस आपको देना है. दोबारा है कि आपको इफिशिएंसी लेके आने का है, तो ये आपको मुनाफा होने वाला है. आपको इफिशिएंसी लेके आनी, वो आप टेक्नोलॉजी से लेके आ सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, आपको अपना कॉस्ट कम करना है. राइट. हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट? either by reducing the wastage or by doing more some with operations less. you can manage. So जो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा आ रहा है कि टेक्नोलॉजी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना रहे जहाँ SSD एक्सेस कर सकते हैं वेरी अफोर्डेबली. HVAC has become a part of the sustainability bandwagon. Yes. We are the elephant in the room. Indoor air quality is being talked about a lot. We are a part of the indoor air quality. पोस्ट कोविड वो इंक्रीज हो गया है IAQ पे फोकस. बिल्कुल. तीसरी बात ये है कि सेफ्टी इज कनेक्टेड टू HVAC. अगर आप कोई फायर डैम्पर्स देखो, आपका फायर डिटेक्शन देखो, all are connected to HVAC. Even the cables. Yes. So fire आ गया. And चौथा, which is called, I call it tertiary, what you call savings, which is by way of IoT, by way of smart programming with use of AI. Correct. So ये जो चारों चीज़ें हैं, whether is energy efficiency, IoT, fire, ये सब आपको एक एक लेयर ऐड कर सकता है आपके बिजनेस में. करेक्ट. जिसको आप साथ में लेके एक सॉल्यूशन कस्टमर को दे सकते हो. और अपने बिजनेस को एक लिफ्ट दे सकते हो. जो कि पतरा और पाइप नीचे पिज्जा बेस की तरह रहेगा, बट आपका टॉपिंग जो है ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज ही आपको आगे लेके जाएगी. ये AC वाले गरम चर्चे के साथ पिज्जा भी आ गया अभी. बिल्कुल. उसके बिना मजे कैसे आएंगे? चर्चे पे मजे कैसे आएंगे? नहीं, सिमिलर लाइंस पे जैसे चैट GPT है, इतना मस्त सोल्यूशन है वो. तो आई हैव टोल्ड कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी कभी जो लोअर लेवल के स्टाफ होते हैं उनको ईमेल लिखने में कभी प्रॉब्लम आ गया कि सर कैसे लिखे, तो वी हैव ट्रेन देम कि आप राइट अ ईमेल टू लेट से सम OEM फॉर अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेयर. तो चैट GPT गिव्स, तो खाली नाम चेंज करके कॉपी पेस्ट करके दे कैन डू. तो अटकते नहीं है काम में. सो आई थिंक सिंपल टेक्नोलॉजी इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लेक्स बाय ओवरथिंकिंग. वैसा है. And sir, so there are, as we know, there are various forums in RATA, जैसे manufacturer हो गया, अपना SSD and HVAC contractors का हो गया. You are also part of HVAC contractors and the SSDs. Yes. So, what are some of the challenges, as a whole, this fraternity which this fraternity is facing, and some solutions for that in which they can take help of RATA, or there are some solutions where अपने खुद को ही कुछ करना पड़ेगा चेंज लाने. So what are your views on those challenges which are there? See, the challenges are multifold. There are certain challenges which you have to tackle yourself. You cannot depend on the government. Correct. And you cannot depend on RATA all the time. So one is obviously, you are the best person to help yourself. जहाँ तक राटा की बात आती है, एक कलेक्टिव लेवल पे फाइट करने की, सोल्यूशन करने की. सो वन इज डेफिनेटली वेयर राटा कैन हेल्प एंड वेयर आई अर्ज ऑल माई SSD fraternity members to take the best advantage of RATA platform is on availability of skilled manpower. How RATA can really make a difference to create a platform where SSGs can look forward to for their challenges, which is skilled manpower currently. And this particular challenge is going to be more and more acute as we grow and go ahead. So skilled manpower is one. Secondly is pricing. Pricing is very important part. Now again, there is as much only RATA can do. Correct. And there is much which lies on the table of a SSD. Of the SSD. और जैसे मैंने मेरे पहले एक टॉपिक जहाँ मैं राटा में स्पीकर था, मैंने वहाँ भी कहा था, मैंने तभी वो अंग्रेजी में कहा था. मैंने कहा ये था, और मैं वापस दोहराना चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत गहरी चीज़ है और हर दिन उसको याद करना चाहिए.
अंग्रेजी में उसे बोलते हैं कि टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश फ्लो इज द ओनली रियलिटी. ओनली रियलिटी. अगर मैं उसको हिंदी में बोलूँ तो टर्नओवर एक दिखावा है, मुनाफा एक समझदारी है और कैश फ्लो ही सच्चाई है. वेरी ट्रू. आप एक समझ लो, हर एक ट्रेडर हो या एसएसडी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो कि आप टर्नओवर के पीछे भागिए मत. आप टर्नओवर जरूरी है ओवरहेड्स कवर करने के लिए, बट कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज द अल्टीमेट सच्चाई है. वो 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान जी ने रैंचो ने कहा था कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए तो सक्सेस जक मार के पीछे. आई थिंक इफ यू डू योर प्रोसेसेस राइट, देन you are there. Sure. And episode 1 में जब मीर सर थे, he had also talked about this 45 days payment का जो गवर्नमेंट के साइड से भी हेल्प हो रही है अभी for MSMEs. Yeah, it is helping definitely. MSME rule of 45 days payment is helping. You know, so to, in a nutshell, skilled manpower is one area where where we can all come together and make an impact. Pricing as much as pricing and payment terms. Correct. And third is the safe practices in industry, which requires a real overall or a relook. And I would urge each and every SSD to relook, because the safety is something which is almost taken as optional, which it should not be, right? Life loss is loss forever. And that particular philosophy of safe life hours, safe man hours comes on the top. So these are the 3 basic areas where we can. वो related to safety मैंने sites पे देखा है कि जब stand fabrication का अपना होता है, that is the max when in order to save cost, वहाँ पे लोग वो जो scaffolding वगैरह they don't do, and then those guys इतना risk लेके वो they fit this and everything. So I think that is still much to change. That is a strict no now. We have to see, we copy everything from West, right? And that's it's okay to really copy the best thing. Correct. But we also have to copy their safe practices, no? Right. We only cherry pick. when जो पसंद है वो देख बाकी छोड़ता. You can't cherry pick the best practices. When you do the best practices, you pick up all the best practices, and that comes that reminds me of one more challenge about the installation practices. There is no standard. Don't have SOPs or SOPs and anything like that. I guess Shrey has already worked on it, and there's one more document is going to come, which is a revised version of best installation practices. So then that is on paper. We ourselves as SSD and HVAC contractor have to, I think, take it in our own hands कि we implement that. Yeah. Because वो तो आ जाएंगे, आई थिंक रूल्स जो है वो आ जाएंगे, बट फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना इज again as I said, it's from top down. The owners and the movers and shakers of the industry have to really, someone has to take it up, has to be in their vision. And I would just add to what he says. Recently Nitin Gadkari ji has mentioned that on the skilling part of it, and he said that each organization should have its own skilling center. He said it in so many words. Each organization, he may have meant medium or bigger organization, but when I say skilling center, it doesn't have to be 1,000 square feet area and with a lot of tools and tackles. It's basically an attitude. Sorry to cut you here, but the initiative by you, which is Anukool ka Gurukul, so that is something related, right, to it, your attempt. Yes. So if you could throw some sentences on that, some light on so Anukool ka Gurukul is basically what it does is give practical training to the ground level. We are not here to teach design and stuff like that. Our intent is to train our own technicians on the basic practices. Say for example, how to take care of vacuum pump. Those guys take the vacuum pump, go to site, and in their answer is, sir, मैंने 2 घंटा vacuum किया. But 2 घंटा vacuum doesn't mean anything, isn't it? Unless you hit a 500 micron, correct. There's no use. No point. And there's another question is to 500 micron ही क्यों, 400 क्यों नहीं? So I have to answer that. So what that skilling center does is to first of all tell them it's not the number of hours, it's a micron which you have to hit. And why have to hit that micron? How to use a pressure gauge, how to take care of your vacuum pump, how to measure a static pressure, how to hold the instrument in a particular manner, how to measure RPM. So very fundamental basics is what we are teaching. We are not teaching design. It's not a design school for the design engineers. It's basically for technicians and site engineers
as to what all technologies are available and how it can be implemented on the site. On the site actually. So it's a DIY. I mean, we have instruments there. Correct. And we have, of course, we've been doing it for many years. Now we formally launched it last week. Okay. And first session was not for the technicians. The first session was for the architects and interior designers. Okay. As to how they can make our life easier. Okay. By giving us a little better height for the ducts and little larger trapdoors That we face day to day, right? Yes. कि 6 इंच से ज़्यादा मिलेगा नहीं, जो करना है करो. वो तो part and parcel है. Yes, of course, sir. So I think we have covered major portion. So I think we talked about RATA. Any message you want to give to the listeners and viewers who are here watching this towards the RATA members, about RATA, about the industry through this medium which is there? मैसेज तो चलो वैसे तो ज्ञान नहीं है. जो भी मैंने आज यहाँ करने की कोशिश की है कि जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है, जो मेरा एक खुद की जो समझ है इंडस्ट्री की, जो लास्ट, बिकॉज आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कुड लुक बैक of last 30 years, 25 years, and I can look ahead for the exciting days of this industry. Correct. And what I've done with an honest effort is to really, come out with my understanding of this industry, how it's going to play, and from my own experiences, and share those experiences. As regards to RATA, when I joined it about a year and a half back, or little maybe 2 years, I was very skeptical, saying that अरे और एक organization आ गया. This was my first gut reaction, typically. But I have seen that momentum building up. Typically, जब ये सब WhatsApp group form होते हैं, and it has a short life, it really picks up, and then one fine day, and it starts, going down. सबके आर्काइव में ग्रुप्स चले जाते हैं, right? But RATA का ऐसा नहीं हुआ. नहीं है. The momentum is just building up, and be it numbers, be it the different kind of things they are really bringing to the table, are discussing and pursuing it till the end. It is not like one flash in the pan, and it is not happening like that. And I can see that, and with this, of seeing it up close in last 2 years, with the confidence I can say, RATA is here. RATA is here to not just survive but thrive. And along with that thriving of RATA itself as an institution, it will ensure that the SSD and the contractor entire fraternity, it can lift them up for good. Okay. So that's my message, and rather plea to all SSDs and contractors to be a part of this association, to take the benefit of this, spread the word around, get them to join. More the merrier. Correct. That's very true. So more united we are, it helps. Yes, it does. And there's no competition. It's all collaborators. We are in the era of collaboration. Correct. There's no competition. Word is gone. That's a very great line. So we'll end our session here, sir. Thank you so much for your time, for all the positivity which you have thrown us, be it from the how RATA can help, so the last line where we don't have to compete, we can collaborate and we can thrive in this industry also with the help of RATA which is there. So viewers, if you have liked this episode of ours, do comment below and follow our social media channels which is there. Once again, thank you, sir, for being here. It was a pleasure hosting you. Praise is all mine. Thank you, Dhrumil. Thank you so much. Thank you.